सो या हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ वैभव एक स्टूडेंट है। उसको फेस नहीं दिखाना है, इसलिए ऑफिस ने फेस बंद करके रखा है। नो प्रॉब्लम। वैभव। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर द हाँ। अपॉर्चुनिटी सर। या ठीक है। तो आपको अभी कितना आपका बीटेक कब खत्म हुआ था? 2021 में सर। 21। तो 21 से ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? हाँ सर, श्योर। हाँ। हाँ ओके। सर। 21 में आपने बीटेक फिनिश किया, अभी 3 साल से आप जॉब कर रहे हो ना? हाँ सर, 3 साल से जॉब कर ठीक रहे है। हैं। और उस 3 साल कहाँ कहाँ पे किया आपने जॉब? तो मैं एक्चुअली गांव पे किया था कंस्ट्रक्शन कंपनी में। हाँ। हाँ सर। और ऐसे ही गांव में ही थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया सर। हाँ। हाँ सर। ओके। ऐसे ही। हाँ सर, बेंगलोर में आ गया था, कोई दूसरा ऑफिस फाइनेंस में काम किया था। ओके। और अभी मेरा एक्चुअली सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है ना, सिविल इंजीनियर से ही स्टार्ट ओके। किया था सर, पेशा ठीक है। से। ये जो गांव अभी में कितने एज साल ए किया आपने? सर 2 साल किया। वो गांव में जब 2 साल की, मतलब 21 से 23 में, आप 23 2 साल आपने साइड का जॉब किया ना गांव में? हाँ सर, साइट पे तो किया वो, है कि इतना हाँ इतना सर्टिफाइड काम नहीं था सर, हाँ, वो पर वो जस्ट नॉर्मल, वो ऐसे। क्या G+1 G+2 G+3 बिल्डिंग था क्या? नहीं सर, वो 5 एकड़ लैंड डेवलपमेंट था, इसमें यूटिलिटी और रोड वर्क करते हैं। हाँ, रोड वर्क, हाँ लैंड डेवलपमेंट का काम, ठीक है। हाँ हाँ वहां पे सर, कितना इसमें। सैलरी था आपको? सर वहाँ पे 15,000। ओके। वो ये ली कौन सा गांव? एक्चुअली नॉर्थ करना था काम। ये लिया जो बीदरा, गुलबर्गा से। गुलबर्गा। ठीक है। हाँ सर। चलेगा, फाइन फाइन फाइन। अभी बैंगलोर अभी आके जस्ट 3 महीना हो गए इस कंपनी में ना? अभी नहीं सर, 1 महीना हो गया। एक ही महीना हो तो अभी तो आपका सैलरी 22,000 है अभी? हाँ सर। ठीक है, डन डन। अब आपका क्वेश्चन पूछो। आपको आईटी फील्ड में जाना है? हाँ सर, आईटी फील्ड में आईटी। मुझे हाँ सर, वहाँ पे स्किल अप करके आईटी में वर्क करना था। ओके। हाँ सर। हाँ फाइन। सर। तो फाइन। तो आपका इंटेंशन, आपका हाँ। वीडियो। हाँ। हाँ सर, आपका वीडियो देख के तो मोटिवेशन था सर कि हमने सिविल पढ़ा है तो सिविल कंटिन्यू करेंगे, ओके। इसी में ओके। ग्रोथ करेंगे, ऐसा था। तो ओके। क्यों मुझे सिविल सिविल छोड़ के आईटी क्यों नहीं जानी चाहिए, सर मैं ओके, डन डन। आपसे जानना था। फाइन फाइन। देखो, इसका क्वेश्चन क्या है कि इसको अभी दो लगभग, एक्चुअली इसने अभी 1 महीने से काम करो एक्चुअली साइट पे। अदर्स गांव की तरफ आप लोगों को पता है, नॉर्मल छोटे मोटे साइट्स होते हैं, वहां पे यू डोंट रिक्वायर इंजीनियर यूजुअली। बट आप वहां पे हाँ काम करोगे 15,000 16,000 की सैलरी में, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड इन दोज जॉब्स एंड ऑल। ठीक है। हाँ फाइन। तो अभी इसका क्वेश्चन है कि अगर मैं सिविल में क्यों रहना है मेरे को, अगर अभी भी 22,000 का सैलरी मिल रहा है, तो मेरे को सिविल में क्यों रहना है? आई कैन गो टू अदर फील्ड लाइक आईटी में जा सकता हूँ। राइट। फाइन। देखो, इट्स हाँ ऑल योर इंडिविजुअल्स डिसीजन कि अगर आपको आईटी में जाने, यू कैन गो फॉर आईटी। ओके। बट बिफोर दैट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट फील्ड दैट वी हैव इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप आईटी में चले जाओ, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू वांट मनी, यू वांट लाइफ ऑल्सो। ठीक है। सी, हाँ प्रॉब्लम इज दैट मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम क्या है ना, हमको लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग मतलब सिर्फ साइट का जॉब है, खत्म, इसके आगे कुछ है ही नहीं। हम्म, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ चीज़, आई थिंक लास्ट टाइम आई हैव शोन यू, बट आई शो यू फ्यू मोर थिंग्स। उसके बाद विल स्पीक वेदर यू वांट टू गो और नॉट। ओके। फाइन। देखो, आई ओके। थिंक लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था, अभी आप जो काम करो साइट का ही जॉब करो, दैट इज हियर, ये वाला साइट का काम कर रहे हो आप। स्क्रीन दिख रहा है ना हाँ मेरा? एक मिनट। दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर, दिख रहा है। ठीक है। फिर ये वाला पूरा साइट का जॉब है। आप अभी बिल्डिंग में काम करो, इसी तरह रोड का आपने किया था, इसी तरह ब्रिज का भी है, टनल का भी है, स्टील का भी है। ओके। बट एनी हाउ, नाउ इफ यू वांट for future again, if you want some office jobs and all, then you should come for this kind of jobs. जैसे फॉर एग्जांपल एस्टिमेशन, यू कैन बिकम एस्टिमेशन इंजीनियर और कॉस्ट इंजीनियर। आप बिलिंग इंजीनियर में जा सकते हो, यू कैन बिकम अ टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर। अरे बैकग्राउंड ಅಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು. ठीक है सर, perfect। ಅದು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ, ನಿನ್ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ अनम्यूट ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. हाँ बेटर, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ अनम्यूट ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ? ओके। उसके बाद देखो, आप प्रोक्योरमेंट में जा सकते हो, प्लानिंग इज ऑल्सो गुड फील्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटीरियर इज ऑल्सो गुड फील्ड, आप इंटीरियर फिट आउट्स में जा सकते हो, कैन बिकम इंटीरियर डिजाइनर। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ आई थिंक लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीडियो मैंने बनाया था बिम के ऊपर, सो इफ यू डोंट वांट ऑल दिस थिंग्स, बट इफ यू वांट सम टेक्नोलॉजी काइंड ऑफ जॉब, देन आप बिम में भी जा सकते हो। सो दिस आर द डिफरेंट ऑप्शंस दैट यू हैव। बट इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग आउट ऑफ दिस, देन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, you can shift towards the IT field, but it's your individual's decision. ठीक है। हेलो। यस सर, यस सर, ओके। यस। ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ इसमें आपको ಅದು ಇದೇ ಮಾಡಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟೇ ಮಾಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಲ್ಲ.
हाँ ओके सर ना, श्योर। हाँ ना, व्हाट इज योर प्लान लाइक, आपको क्या करना है अभी? आपको अभी देखो, सिविल में इतने सारे ऑप्शन है यार, इसने इतने सारे ऑप्शन, अभी तुम साइट पे काम कर रहे हो ना, तो साइट से यू कैन गो फॉर अ प्लानिंग इंजीनियर का जॉब, बिकॉज 1 year ऑफ साइट एक्सपीरियंस इज सफिशिएंट टू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर। ठीक है, तो यू कैन गो फॉर अ प्लानिंग इंजीनियर का जॉब। एल्स अगर आपको बीआईएम सीखना है तो आप बीआईएम सीख के चले जाओ, यू कैन इवन गो फॉर अ बीआईएम फील्ड ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। सी ओके, बट अगर आपको इसके बाद यू कैन इवन गो फॉर अ कॉस्ट इंजीनियर, एस्टिमेशन इंजीनियर का जॉब है, उसमें भी आप जा सकते हो। So after this, you can go for building. Of course, after estimation engineer, you can go for building. Sometimes this both will be done together. Even in future, after 3-4 year of experience, you can become a tender contract engineer also. And अगर आप बड़े बड़े firms में काम करोगे, then even you can become a procurement engineer also. So these are the options that you have. So हाँ one question that आपको IT में क्यों shift करना है? Because what is the main reason for you to shift towards IT? One is because it's an office job you want to shift. सर, ऑफिस जॉब भी है, और जो टेक्निकल टच मिलता है ना सर, पूरा हाई एंड टेक्नोलॉजी उसमें। यहाँ पे Okay. रिपीटेटिव वर्क होता है, वहाँ पे कोडिंग। हम्म हम्म और हम्म ओके सी, जरूरत ज्यादा है ऐसे में चुना हूँ। हाँ ओके ओके, देखो ऑफिस जॉब, सी ऑफिस जॉब, ये सारे ऑफिस जॉब, इसमें कोई भी आपका साइड का जॉब नहीं है। फॉर एग्जांपल, इफ यू बिकम एस्टिमेशन और कॉस्ट इंजीनियर और बिलिंग इंजीनियर, इट्स ऑलमोस्ट लेट्स से 70 to 80% ऑफिस जॉब ही है। समटाइम्स यू हैव टू गो टू द साइट एंड ऑल फॉर टेक सर्टेन मेजरमेंट्स एंड ऑल। Procurement engineer is almost like, let's say, 60 to 70% office job only. Whenever the material comes to the site and all, you have to check. Other than that, BIM and all is like 100% office job. All this are your of planning engineer is also almost, let's say, 80% of 80-90% is also your office jobs only. Okay, so if you want office job, go for this particular field. This is one option. But if you're someone who is looking for office job and technology, then BIM is something which you can think of. BIM में क्या होगा, दोनों मिलेगा आपको, ऑफिस वाला जॉब भी मिलेगा। आई थिंक लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था ना बिम के ऊपर, आपने देखा है क्या? हाँ बनाया था। हाँ, तो बिम हाँ वाला देखा मैंने, है तो। हाँ मैंने बिम का एक वीडियो बनाया था। आई टोल्ड कि इफ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, ओके, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था, दिस आर द थिंग्स, इस तरह से AR VR वी हैव। सो आप इस बिम वाले फील्ड में भी आप जा सकते हो, इफ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजीज, इफ यू वांट ऑफिस जॉब, एंड देयर इज मनी आल्सो इन दिस, so that at least you are sticking to your civil job only. But if you don't want that, you can go towards the IT field, because end of the day, you are, see, I can guide you anything, but if you don't have passionate, or if you're not passionate about your job, then you have to take a call on that, then you have to decide which field you want to go. But in office job, if you want, these are the options that we have, all these are the options. In office you can become a QS, you can even go for interior fit out, interior design job is good, structural engineering is also good, but you should have passion for that. It's not like you operate with stat pro ETABS, you don't become a structure engineer. For that, your fundamentals should be good in structure analysis, strength of materials, RCC and all. That also you can go. For doing a structural engineer job, you don't require MTech. MTech is not mandatory, but if you have MTech, it's well and good. That's how it is. But you require a lot of efforts in structure engineering. Your concept should be good. यस सर। ये वाला भी पहला आप वीडियो कर पे सकते। आपने बोला था। हाँ सर हाँ, बोला था, वो चेरी अंदर केक होगा ऐसा बोला था आपने लास्ट यस, वीडियो में। हाँ। एमटेक, हाँ सर। एमटेक करने से स्ट्रक्चरल में कर सकते हैं सर, एमटेक अगर फ्यूचर इन फ्यूचर See, स्ट्रक्चरल इंजीनियर। by doing MTech, you are just getting a degree. It's not that in MTech you'll not learn how to design the buildings and all again. Okay. MTech, because what is required in the industry is not taught in the engineering colleges. ठीक है, तो एमटेक करने से क्या होगा अगेन, बट इफ यू डू इट फ्रॉम वेरी गुड कॉलेज लाइक NIT एंड IITs, तो वहां पे ऑन एवरेज 6 लाख इज अ पैकेज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। इफ यू डू फ्रॉम IITs एंड NITs, गुड IITs, फिर 6 लाख रुपीज पर एनम, दैट रफली कम्स टू 50,000 का सैलरी आपको पर मंथ मिलेगा अगर आप एमटेक करोगे अच्छे कॉलेजेस से। हाँ सर। तो ये वाला भी आप कर सकते हो, इफ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट स्ट्रक्चर डिजाइनिंग एंड ऑल, यू कैन डू दैट, बट only from NIT and IITs, they have these options of 6 lakh, 7 8 lakh. Even if few company pay 7 8 lakh, but on average the salary is 6.5 lakh, which roughly comes to 45-50 के आसपास मिलेगा। हाँ सर। सर ये वर्क वाला लाइफ आप कर, बैलेंस या ये हमारे इंडस्ट्री में सिविल में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहेगा तो। हाँ सी, सर तो। इट हाँ ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल डिसीजन। या वर्क लाइफ बैलेंस, आप IT में अगर आप जाओगे, आपको क्या लगता है कि आप IT में जाओगे, आप सुबह 9 बजे जाके 5 बजे घर आओगे क्या? वहां पे भी आप 6 7 8 बजे तक तो काम करोगे ना। एवरी प्रोजेक्ट हैज अ डेडलाइन, इट्स नॉट ओनली द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैज अ डेडलाइन। व्हेन यू वर्क इन एनी इंडस्ट्री, एवरी प्रोजेक्ट हैज अ डेडलाइन। व्हेन एवरी प्रोजेक्ट हैज अ डेडलाइन, देन यू हैव टू वर्क आफ्टर 6 7 8 PM। इफ देयर इज कोई भी प्रोजेक्ट अगर प्रायोरिटी पे है, तो आपको 6 बजे 7 बजे 8 9 बजे तक भी काम करना पड़ेगा। साइट वाले जॉब में थोड़ा ज्यादा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, एनी हाउ यू आर नॉट गोइंग टू अ साइट जॉब ना।
अगर ऑफिस जॉब में आना आना है, यू गो फॉर दिस आर द ऑप्शंस। देखो काम तो सारे देखो, नो बडी विल पे यू, वन थिंग यू टू रिमेंबर इन योर लाइफ, नो बडी विल पे यू 50,000 रुपीज का सैलरी एंड आस्क यू कम एट 9 o'clock एंड लीव एट 5 o'clock in the evening. That will not happen. Because when somebody is paying you 50,000 rupees, 60,000 rupees per month, nobody will tell, okay, you come at 9 o'clock, Akshay, and exactly 5 o'clock you leave. Saturday, Sunday, you take holiday, no problem. After 5 o'clock, you don't work on it. Nobody will tell you. All the company will have one working time, but beyond that also most of them will work, because जब आपका प्रोजेक्ट डेडलाइन पे रहेगा तो ऑब्वियसली आपको काम तो करना पड़ेगा ना। सिंपल है ना। यस सर, यस हाँ, सही है सो सर। इट्स नॉट, अगर तुम सिविल, अगर आईटी में जाओगे, टेल मी हाउ मेनी पीपल लिव ऑफिस एट 5 o'clock, वेरी फ्यू पीपल लिव एट 5 o'clock। मोस्ट ऑफ देम अगर 6-7 बजे तो नॉर्मल टाइमिंग होते हैं सारे फील्ड में। ओके। बट अगर आपको हाँ सिविल सर। में बताऊंगा, आई थिंक लास्ट टाइम आई टोल्ड देयर इज वन ऑफ माय, एक मेरा एक फ्रेंड, एक हमारा एक, आई विल शो यू दैट। ठीक है, सो सी इन सिविल ऑल्सो, यू इफ यू वर्किंग एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, वेरी गुड फॉर्म, यू सी ही इज वन ऑफ माय फ्रेंड आतिफ नवाज, ही इज वर्किंग इन एटकिंस कंपनी इन बैंगलोर। ओके, एटकिंस इज एमएनसी कंपनी फॉर स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। उसने क्या बोला कि 5 days उसका वर्क है, 9 to 6 p.m. उसका ऑफिस का टाइमिंग है। पर इट्स नॉट इजी, वन थिंग यू रिमेंबर, दैट डायरेक्टली यू नॉट गेट सच बिग कंपनीज एंड ऑल, you have to work for some time and all, and after that you can go for such position। अगर आईटी में भी जाओगे, ऐसा कुछ नहीं 9 to 5 ही जॉब रहेगा ना, आप भी 7, 6, 7, 8 o'clock, 9 o'clock तक आप काम करोगे वहां पे। Maybe when you reach certain level, you may leave at 5, 5:30, 6 o'clock in the evening. But the moment your position increases, you'll have a lot of responsibility. Then you will leave office at 7, 8 o'clock in the night. Simple. The more the money, the more the responsibility. You will stay there on the office or maybe somewhere, because your responsibility is more. That time you'll not run at five यस o'clock सर। in the evening. Oh, I'm manager, I'll leave at 5 o'clock. What about other people? So when you position increases, then your responsibility also increases. No, if you're a team lead, so you have to lead the team. No, समझ में आ हाँ रहा है सर, आपको? यस। तो हाँ आप समझ में आ बोलोगे रहा है। नहीं तुम काम करो, हम 5 बजे जाएंगे, तो फिर आपको टीम को कैसे लीड करोगे? यस तो he is that guy जो मैंने बोला था आपको, present is working in Atkins as a structure engineer. He also started with a site engineer only. If you see here, he started with a site engineer only, but slowly he learned, he went to the designing, he worked in building, then he came into bridge, now he's working there. So again, I've shown you the screenshot also, that chat option also I've shown you. So you have, but at once it will not happen suddenly. You cannot get a job in Atkins. It's not easy to get a job in Atkins and all. But if you work for some time, slowly develop your skills, it's possible. ओके। यस सर। हाँ, और क्या क्वेश्चन है? हाँ ओके सर। हम मोटिवेटेड रहेंगे सर, आपकी वीडियोस देखते रहिए। हाँ देखो, ये वीडियोस सब देख के मोटिवेट तो रहेगा, पूरा दिन मेरे वीडियो देखते नहीं रहोगे ना आप। नहीं नहीं सर, इसके लिए जो नहीं सर, पढ़ाई जो चल रहा है ना। हाँ, तो हाँ सर, आपका यहाँ पे फ्लो में बिकॉज समथिंग नो फ्लो में सीखेंगे। मोटिवेशन, यस, मोटिवेशन इज समथिंग लाइक दिस। ऐसा हाँ करके सर। नीचे लेके आएगा मेरा मोटिवेशन। आपने मेरा वीडियो देख लिया, बोल दिया हमने स्ट्रक्चर इंजीनियर बन गए, कल वो 2-3 प्रॉब्लम आ गए, कल कोई बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स ड्रॉ करना आ गया, आपको लगा यार कुछ नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बट अगर वो हाँ सर। कंसिस्टेंसी है आपके पास, इफ यू हैव कंसिस्टेंसी, इट विल बी लाइक दिस। हाँ मोटिवेशन सर। विल बी ऑलवेज लाइक दिस। आज मोटिवेट हो तुम, कल सुबह मॉर्निंग नहीं लग रहा है, नहीं होगा मेरे से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इतना टफ, पर अगर वो हाँ कंसिस्टेंटली इफ यू लर्निंग सर्टन थिंग्स, देन डेफिनेटली इट विल बी हाँ लाइक दिस। सर, ओके। अभी जो आपके जो कोई भी स्टूडेंट्स है ना सर। हम्म। हाँ सर, जो कोई भी आईटी में शिफ्ट हो गया है और जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, क्या आप बता पाएंगे सर? क्योंकि नो, वंस दे जो शिफ्टेड टू आईटी, आई डोंट स्पीक। नो, अगर कोई भी मेरे को रिप्लाई करेगा, आई टेल, सी देयर इज वन हाँ स्टूडेंट ऑफ माइन, अमर्त्य बिस्वास, वो हाँ सिविल में उसने काम किया, ही डिड एमबीए इन फाइनेंस। हाँ सर। He did MBA in finance and he went there. He is getting around 10 lakh का salary. 10 lakh मतलब roughly he is getting 60-70 thousand rupees per month. उसने हाँ दो सर। साल का MBA किया and I think he spent some I think 7-8 lakh rupees for the education. ओके सर। आपको मैं दूसरा ऑप्शन बता दूंगा, अगर आपको सिविल में रहना है ना, आई गिव मी हाँ सर। 1 to 2 year ऑफ टाइम, आपको एटलीस्ट 40-50 thousand वाले सैलरी पे हम लगा देंगे। मैं आपको बताऊंगा, देयर इज वन इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर, आई नॉट नेम इट हियर, फिर दैट इज ओके दैट सर। ओके, आपको मैं बाद में कॉल के बाद बताऊंगा। इन बैंगलोर इज इंस्टीट्यूट, द कोर्स फी इज समवेयर क्लोज टू 3.75 lakh rupees. They ओके सर। make you work for 1 year, and after 1 year, these people only will help you get a job in a very good company. You can work as a project coordinator, you can work as a project planning engineer and all. And what they promise is minimum 35,000, but you can get around 40,000 ka salary after 1 year.
That I can do if you want to stick to civil only. वो मैं आपको बाद में बता दूंगा. I will not tell it on here. वो मैं आपको Okay, बाद sir. में बता दूं. Even you can go for interior jobs also. Interior fit out engineer jobs is also. अगर if you don't want this site job and all these things, even in this interior fit out you have a job. You can become interior designer also, where you use a Google SketchUp का software. If you like all those things, you can do. Else you can even go for BIM jobs also, no problem. That's how it Yes. is. Instead of going for IT, better BIM is something better for you, because that is how it is. Because BIM also, see, you wanted an office job, you want a life of, let's say, 9 to 8, 9 to 7 kind of job you want holiday on Sunday. This is your requirement, no? Yes, sir. But you want to be in contact with civil field only. BIM is something which can help you do that, where you'll be working as an office job, you'll be working in good MNC companies, and also Sunday will be a holiday, and that is also. But again, initially it's not that directly you'll get a 50-60,000 salary. You'll not get. You may start like 15, 20, 25, 30,000. But again, BIM and all, you require 6 months of training. Okay, BIM require Yes, at sir. least 6 months of training. BIM is not Revit. BIM is not like you learn Revit software and tell I am a BIM engineer. It will not happen. In BIM, first you have to learn Revit structural software, Revit architecture. After Revit architecture, there is a structural software. Then you will be learning Navy's work for clash detection. Apart from that, you have to work on at least 3 to 4 live projects. When you join certain training institutes, those are pretty good. They will train you on these 3 to 4 live projects. You will do completely everything you're going to do, right from modeling to each and everything you will do, clash detection, quantity takeoff. You'll do all these things. And once you work on 3 to 4 projects, at least a person who will take 1 year of experience, that much you can earn through these trainings of 6 months, and then you can apply for a very good company. Again, your English should be good. A basic, you should have a basic English. Okay. Yes. If you want, you can BIM also. You can think structure engineering is also good, but structure engineering requires a lot of understanding, especially strength of material, structure analysis, subjects and all. If your fundamentals are good, you can do that. Yes. So आपका एम ऐसा कुछ नहीं क्या, खुद का कंसल्टेंसी ऐसा कुछ डालना नहीं है? यू वांट टू वर्क इन बिग कंपनीज ओनली? हाँ हेलो. सर, कंपनी कंपनी में वर्क करना है. हाँ, आपको ऐसा कुछ खुद का कंसल्टेंसी डालना है, खुद का एक ओन ऐसा कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलना है, ऐसा कुछ नहीं है ना आपको? सर अभी वो तो फ्यूचर प्लानिंग मन में है सर, पर अभी टाइम नहीं नहीं नहीं, लगेगा ना सर. फ्यूचर प्लानिंग वैसे करोगे तो बिम में जाने की जरूरत नहीं है. सही, इट ऑल इंटरकनेक्टेड. यू कैनॉट बिकम, आप बिम में जाके कल मेरे बोलोगे सर 4 साल के बाद मैं खुद का कंसल्टेंसी डालूंगा, बिम सीख के क्या कंसल्टेंसी डालोगे आप? बिम का ही कंसल्टेंसी डालना पड़ेगा. अब तुम गांव में जाके रहोगे तो देन यू शुड बी गुड इन ऑटोकैड का प्लानिंग करना आना चाहिए, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करना चाहिए, एग्जीक्यूशन करना. इन बिम यू विल नॉट डू एग्जीक्यूशन वर्क एंड ऑल. हाँ, बट यू हैव अ नॉलेज नाउ, दैट इज फाइन. बट इन दैट केस आपको ऑटोकैड में प्लानिंग करना, वास्तु के हिसाब से प्लानिंग करना आना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करना आना चाहिए. बिम यू विल नॉट डू वास्तु का प्लानिंग एंड ऑल, दैट इज डन बाय द आर्किटेक्ट. यस सर. हाँ, बट इन फ्यूचर अगर आपका कोई इंटेंशन ही नहीं है, यू आर रेडी टू वर्क इन मेट्रो सिटीज, एंड यू आर रेडी टू वर्क इन MNC companies, and you are ready to work in private firms only, go for BIM. Then again, after that, don't decide कि I'll come back and start my consultancy. BIM consultancy you can start, but again, that requires knowledge also. No, with 2 to 3 years of experience, you cannot do. It requires 4 or 5 years of experience. That also can be done after some time. If you have the plan, else you work in private only, no problem. If you are earning 1 lakh rupees and all, then again you continue with that only. No, why you want to again leave that and start consultancy and all, unless you have made enough money. यस सर. Okay. लास्ट क्वेश्चन. हाँ. अगर अगर कंसल्टेंसी ही प्लानिंग है सर, तो आप क्या बात यस. रिकमेंड यस. करेंगे? अगर कंसल्टेंसी करना है आपको, लेट्स से आपको कुछ नहीं हाँ. करना है सर, अभी मैं काम कर रहा हूँ साइट पे, पर मेरा फ्यूचर का गोल है कि लेट्स से टुडे इज 2024, नो? ओके, लेट्स हाँ. से हाँ. you have a plan of starting your own consultancy in 2027. I want a 3 year time. ठीक है? So in that case, the skills that is required is site execution skill is required. Okay? Hello? हाँ. यस सर. यस. Okay, you require a site execution skill, because once you start your own consultancy, you have to go for site visits also. You should know the entire यस. construction of sequence of construction and all. Apart from that, you should know estimation. Okay, you should know estimation. Again, it involves everything, BOQ preparation and entire thing. After that, before that, first is you should know the planning part. AutoCAD planning. When I say AutoCAD planning, you should know. You can use AutoCAD or Revit, that's a different thing.
In that, you should know about Vastu planning, how to do, because people ask about, because basically you'll be doing normal G+1, G+2 buildings and all, right? Yes. Residential part, G+1, G+2 buildings and all you are going to do. So in that case, you should know how to do the plans, how to do it according to the building bylaws, each and everything you should be knowing. Okay? Okay? Yes, sir. This is first criteria. After that, हाँ, this criteria is done. Second criteria you have, you should know structural designing, because once you prepare the plan, you should do structural designing. So structure हाँ, sir. designing, you have two options. Either you do it or you outsource it. Outsource. Outsource means you hire a structural engineer. You tell him that this is a plan what I have done. You do the structure engineering. You do the structural design of this. You can outsource. You don't have to learn structure designing again. Okay. हाँ, हाँ, sir. समझ में आ रहा है? Then third is, once that both are done, you have to do the site execution. So should have the knowledge of site execution. Along with that, before site execution, you should know how to do the estimation, BOQ preparation. You have to give a rate to a client, no, that this much is the cost of the project. That you should know, and that's it. So if you have this much knowledge, it's enough. Now, how do you approach this? These are the basic skills. Today is 2024. 2027, you have 3 years of time. Yes, sir. What you do right now, you're in Bangalore. For the next 2 to 3 years, for the next 2 to 3 years, you in Bangalore, you work under any consultancy. Work under any consultancy. Now, what do I mean by consultancy? I'll give one small example. Okay, you're in Bangalore, no? Consultancy. I'll take you the Bangalore example only. 1 minute, huh? What is that? RCC construction. Construction, Bangalore. So this is RCC Bangalore. Okay. This is one of the consultants. There are many consultants. This is one which I know, which I've seen through YouTube videos and all. Okay. So these are the people, those are into construction. What kind of construction they do? They do normal residential building construction and all. Okay. See, you want to do such kind of consultancy, no, in future? Hello. हाँ, yes, sir. Yes. ऐसे आपको घर बनाना होगा, ऐसे आपको घर का नक्शा सब बना के लोगों को देना होगा. This is what your intention is, na? Yes. Okay, fine. G+1. So what you will do, I'm giving one example. You will go to these people and start to work under them. Okay. Yes, sir. When you work under them, what will happen? You learn how to prepare the plan. You learn how to prepare the BOQ, estimation. You'll also go for a site visits also. Let's say if you're working for 2 Yes, to sir. 3 years, and if you can do at least 5 to 6 projects, 5 to 6 is a very less project, but let's say in 3 years, at least if you do 10 projects, of course, from start to end, will you not be in a position to start your own consultancy after 3 years? Because in 3 years, you've done 10 complete projects like this. And in these Yes, 10 sir. complete Yes. projects, you have learned how to prepare a plan. You have learned how to do the structure designing. You learned how to prepare such kind of 3D models. You have to take courses, and also you learn from the courses, I'll tell you. Okay, because unless and until you don't take any courses, then learning everything in 1 year and all not possible. Because AutoCAD, Yes, sir. 3D designing, will take time. It takes a lot of efforts. So once you work under them for 2 to 3 years, then after third year, you'll have that much knowledge where you can do the execution, you can do the planning, you can do the 3D elevations, you'll understand the building bylaws of Bangalore, 30-40 ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು and all, you will be able to understand. Then definitely you can start your own. Yes, sir. This is how, but minimum 2-3 years you have to work under someone who is already into the same industry. You cannot tell that I'll learn from courses and I'll start. You will not, even if you learn, also you will not have that confidence within you. This should be the MNC is good or consultancy? again, it's up to you. And it's nothing about MNC or it's like requirement what you want to do. Whether you want to go to Bangalore or whether you want to go to Delhi. You should not ask me Bangalore is good or Delhi is good. Okay. So if you want Yes, to go sir. to Bangalore, I'll tell you the Bangalore route. If you want to go to Delhi, you should ask me, I'll tell you the Delhi route. That means if you want to work your own consultancy, this is own consultancy. Delhi is your MNC. Now don't tell me, sir, Bangalore is good, is Delhi is good. Depends on which you like. Delhi is also good, Bangalore is also good. Few people like Delhi, few people like Bangalore. Understood? No. If your intention is, I don't want to take that, I don't have that entrepreneurship element in me. I don't want to take this risk and all. I'm someone who will work from Monday to Friday, or let's say Saturday. Sunday will be chill for me. And I'm okay in working in some big firms and all. Go for MNC company. But you're someone like, no, I want to do something on my own. I'm an entrepreneurship guy. Even Sunday, because when you start your own consultancy, Sunday also you should be working sometime.
because it's your own consultancy. Sunday sometime you may go to meet the client. संडे समटाइम्स आप क्या करोगे, साइट विजिट पे भी आपको जाना पड़ेगा ना. अगर आप क्लाइंट बोलेगे ना Yes, संडे को आके मीट करो, यू कैन नॉट टेल संडे इज हॉलीडे. नो, because if you yes, sir. don't go on Sunday, you'll not get project. MNC company Sunday is holiday because you are employee there. The manager will think. Yes, You don't have to think. yes, So yes, it's sir. up to you. Sunday का दिन आपको जाना पड़ेगा. And again, all this, there's a lot of challenges and all. You have to, when you start your own consultancy, you should have good relationship with architect, structure engineers, masons, I mean contractors. Each and everything knowledge you should have. MNC company, what happens if you're working as a, let's say, structure engineer, only structural part only you'll be thinking. You'll not think what is happening with the architect and all. I mean, you'll speak with them, but you don't have to think, or you don't have to think, okay, this project is done. Tomorrow, what project I'll give? There are people, marketing people will think which project we have to take next. Here, what happens, since it's your own consultancy, you require money. One project is done. With one project, you cannot run your family, no? Yes, sir. If tomorrow you want one project, then you have to run behind the projects. You have to see where the projects are coming up. You have to speak with other people and all. So if you're someone who is challenging, who likes challenges, and अगर आपको लग रहा है कि this is what I want, you can go for this thing. अगर ऐसे जाना है तो आप ऐसे जाओ. Yes, sir. ठीक है? Yeah, हाँ सर. that's it. Done, sir. Okay, done. Baki courses, I would suggest one is construction manager mastery. But again, this will not help you completely, because if your aim is to work in BIM and all, I don't have a course on BIM. I'll tell you a separate course for BIM. You can decide if you want to work as a BIM engineer. I don't have a course. I'll suggest Okay, you few other trainers. I know few people. You can take their demo and do that. Structure engineering, if you want basic level, I'll teach you. Advanced level, again, I'll refer to a different person. But if you want to start your own consultancy and all, you can go for this course. This course is enough for you to start your own consultancy. Along with that, I'll make you enrollment in one of the AutoCAD course. मैंने एक सर से टाई अप किया जिनको 15 ईयर का एक्सपीरियंस है. वो पूरा आपको वास्तु प्लानिंग से लेके सब कुछ पढ़ाएंगे. दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 7,000 रुपीज. एंड फिर आपको एक स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का कोर्स है विच इज taught by a 5-year स्ट्रक्चर इंजीनियर. He'll charge you around 5,000 rupees. So that will roughly cost you 4,000 or 11, around 16,000 if you can spend. I require time. In 1-2 months, I cannot make you to that level. At least you should give 5 to 6 months of your time. This is one option. Even if you go to learn BIM also, you require 4 to 6 months for BIM. BIM will cost you around 30,000 because 30,000 fees is required for BIM. 30, 35, 30 is required. The person on whom I know, he will charge you around 30,000. okay, Okay. yes, sir. Yes, sir. Yeah. So this will be your game plan. So you decide which field you want to do. If you don't know all these things, then at any you have to lead your life. You can go for IT. But आपने IT का कोर्स तो कर लिया है ना? Yes, sir, I have to start. You have to start. Okay. You are just in confusion whether to go with IT or stick to civil only. Yes, Okay. So it's up to you. Like from my side, I have explained you all these things. But if you feel this is not something which you're interested for, better you can think. You can even go for IT. But see, in IT also not everybody will start from 50,000 and all. It's a myth. क्योंकि आईटी में भी क्या हो रहा है, तुम ऐसे कोर्सेज करके जाओगे, तुम भी 20-25 हजार की नौकरी से स्टार्ट करने वाले हो. वो सब क्या है, कॉलेज वाले प्लेसमेंट वाले लोगों को 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का सैलरी मिलता है. ऑफ कैंपस यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट ब्रांच. आप सीएस ब्रांच से नहीं हो. आप ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जाओगे. आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जाओगे तो कोई 15,000, 20, 25, 30 हजार की नौकरी पे लगाएगा आपको. अगर आपको 15, 20, 25 का ही जाना है, हमारे इसमें आ जाओ. बिम में आप जा सकते हो. प्लानिंग इंजीनियर में, जैसे मैंने आपको अब एक बैंगलोर का प्रोग्राम बता दिया. बैंगलोर का प्रोग्राम में आप हाँ सर. आराम 1 से 1.5 साल के बाद 40,000 तक आप पहुंच सकते हो. एंड स्टिल यू आर इन सिविल ओनली. Yes, sir. ये भी आप कर सकते हो. ये सब कुछ नहीं करना है बिकॉज सी यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश. आप चाहे आईटी में जाओ या सिविल में आओ, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश ओनली. बट एटलीस्ट सिविल में तो बेसिक कुछ तो नॉलेज है आपके पास, क्योंकि 2 साल अपने साइड पे किया, कुछ तो पता है आपको. Yes, sir. ठीक है, डन. ओके. और कुछ पूछना है? Yes, sir. Done. No, sir. No, sir. Thank you, sir. ಓಕೆ ಡನ್. ಬಾಕಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, sir. ಓಕೆ, ಯು ಡಿಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್. ಚಲೋ, Okay, ಫೈನ್ sir. ಫೈನ್ 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 ದೆನ್ ವೈಭವ್. ಓಕೆ Thank you. Thank ಓಕೆ you. ಓಕೆ ಡನ್ ಮೇಡ್. क्या सो अगर आप लोगों को भी इस तरह से कोई मेंटरिंग सेशन चाहिए, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट टू मी. तो मेरा एक व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आप मेरे को व्हाट्सएप करिए. डोंट कॉल 8095128107. मेरे को व्हाट्सएप करिए.
whatever guidance you want, I can help you. Whatever knowledge, best knowledge I have, I can help you. And if I cannot help you, I'll connect with some other people in the industry whom I know. And my courses are better. For someone who is fresher within first year, second year, third year, final year of engineering, who are having 1 or 2 year of experience, my courses are better. I would suggest you. This is a construction manager mastery course. Is a very good course where I'm covering maximum site का knowledge, estimation, drawing, reading, concrete technology, basic project planning cover हो जाएगा. It's a very good course. आप ले सकते हो. इसके अलावा अगर आपको बिम का फील्ड में भी जाना है, मैंने एक वीडियो बना के रखा है बिम के ऊपर. गो टू माय यूट्यूब चैनल, वहाँ पे एक मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला है बिम के रिगार्डिंग. आप उस वीडियो को देख लीजिए. यू अंडरस्टैंड कि बिम किसको जाना है, किसको नहीं जाना है. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको और दूसरे कोई स्ट्रक्चरल फील्ड में जाना है या कोई फील्ड में जाना है, आई विल गाइड यू लाइक व्हाट हैज टू बी डन एंड ऑल. फाइनल डिसीजन आपका होगा. ऐसा कुछ नहीं है को. देखो, फ्यू स्टूडेंट्स मैसेज में कि आप कोर्स सेल कर रहे हैं. कोर्स मेरे को, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं कोर्स बताऊंगा ना. अगर या सो वीडियो में कुछ प्रॉब्लम था. आई एम डूइंग अनदर वीडियो फॉर दैट. ठीक है. देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि साहब कोर्स सेल कर रहे हैं, सारी चीज. देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, लेट्स से अगर आपको फीवर है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो डोलो 650 लिख के रखेगा. दैट इज अ सॉल्यूशन. आप चाहिए तो बीट, जिसने एमबीबीएस किया वो भी वही लिखने वाला है, जिसने एमडी किया वो भी वही लिखने वाला है. तो आप मेरे पास आओगे, अगर आपका ये सारे चीज प्रॉब्लम है कि आपको साइड का नॉलेज नहीं है, एस्टिमेशन का नॉलेज नहीं है, ड्राइंग रीडिंग का नॉलेज नहीं है, सो आई वुड डेफिनेटली टेल दैट मेरे पास एक कोर्सेस है, यहाँ से कर लो. अगर मेरे पास नहीं करने, दूसरे बंदे से करो. वो भी नहीं करने तो आप कहीं और से सीख लीजिए. बट एंड ऑफ द डे आपको सीखना पड़ेगा. हमारे पास आएंगे थोड़ा जल्दी सीख के जाओगे, किसी और के पास जाओगे या नहीं सीखोगे तो हो सकता है आपको 2-3 साल लग जाएंगे. इतना ही डिफरेंस है. तो इफ यू सी ऑल द रिव्यूज एंड ऑल, सब स्टूडेंट्स का रिव्यू है. जिसने मेरा कोर्स लिया था, अभी वो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है. यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स ना. ये सारे कोर्स के रिव्यूज है. ऑल दिस आर रिव्यूज गिवन बाय द स्टूडेंट्स ओनली. ठीक है. So you can see here, I'm already currently working in construction field by attending your course in site engineer mastery. After that, gain all deep knowledge of, okay, I'm interested for a construction manager mastery course. You can, आप सारे रिव्यूज देख सकते हो स्टूडेंट्स का. वन ऑफ माई स्टूडेंट जिसने सऊदी में काम कर रहे हैं, द फर्स्ट इंटरव्यू गॉट सिलेक्टेड. Okay, you can see all the reviews given by the students. After attending a 6 month construction manager mastery course, even the layman will become a professional civil engineer. Okay, these are the students working in Dubai. Students are working in Oman, and he got a job in Dubai. So he is, I guess it's the same thing. सर, मैंने बहुत से कोर्सेज लिया है, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड, रियल प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त. ओके, ही इज वर्किंग इन L&T. So all these are the reviews given by the students. Has recommended more than 50 plus students. He got a job as a site engineer, and you can see all these things. These are the reviews given by all the students. I was a frustrated civil engineer earlier when I don't know about your course, fortunately and all. Okay, दैट्स इट सर. सारे ऑल दिस अदर कोर्स का रिव्यू से आपको मैंने एक बार दिखा दिया. ना विल स्पीक ऑन दिस स्टूडेंट ओनली. ये जो वैभव स्टूडेंट है, आई होप, इसको देखो आईटी में जाना था. ओके, तो आईटी में वो जा सकता है, डोंट हैव अ प्रॉब्लम. पर अगर उसको लगे कि मैं सिविल में मेरे को रहना है, तो एट प्रेजेंट समथिंग विच इज रिलेटेड टू दैट आईटी वाला जॉब इज बिम, इज समथिंग विच यू कैन थिंक ऑफ. क्योंकि बिम में क्या होगा, बिम का देखो, आपको सिविल से आईटी में क्यों जाना है मैक्सिमम लोगों को, क्योंकि आपको ऑफिस वाला जॉब चाहिए. तो बिम में भी आपको ऑफिस वाला ही जॉब है, जहाँ पे आप लेट से मंडे टू सैटरडे तक काम करोगे. लेट से 9 बजे से शाम तक, लेट से 6 बजे, 7-8 बजे तक आप काम करोगे. एंड आपको आई थिंक उसी लेवल का भी सैलरी आपको मिल जाएगा. तो इंस्टेड ऑफ कंप्लीटली गोइंग फॉर आईटी फील्ड, मैंने कहा कि तुमको अगर सिविल में ही रहना है तो आप बिम वाला कर लो. इवन प्लानिंग का जॉब भी अच्छा है, प्लानिंग इंजीनियर का भी जॉब भी अच्छा है, वो भी आप कर सकते हैं. अगर ये दोनों नहीं करने इसको, लेट हिम गो फॉर द आईटी फील्ड, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर थिंग्स टू सजेस्ट. सो दिस आर द थिंग्स व्हाट सजेशन आई हैव गिवन. तो आप बताइए आपको कैसा लगा कि जो मेरे सजेशन दिए. इफ देयर इज एनीथिंग दैट आई मिस्ड इन एडिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि सर ये चीज आपको उसको बताना था. मे बी आई इम्प्लीमेंट और आई जस्ट कन्वे हिम ओवर द टेलीफोन कि ये सारे स्टूडेंट्स ने सजेशन दिया. एंड इफ आई फील योर सजेशन इज समथिंग बेटर, आई सजेस्ट हिम. ठीक है. एंड फॉर समबडी जिसको ये सारी चीज सीखना है, आप मेरे सिविल ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड करिए. उसमें हमारे ये सारे कोर्सेस है. चेक द कंटेंट, एक बार चेक करिए. अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज आपको सीखने आपको नहीं पता है, तो डेफिनेटली आप एनरोल करिए इस कोर्सेस में. यू गेट अ डेफिनेट एंड वंडरफुल नॉलेज. सो दैट्स इट. एंड जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए. सो दैट इस तरह से मेरे पास और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रॉम दुबई, कतार एंड ऑल, दे ऑलरेडी लाइंड अप. मैंने उनका इंटरव्यू ऑलरेडी लिया है. वो सारे आगे वीडियोस आएंगे. वो सारे चीज जिसका एज 20 ईयर से जो साइट पे जॉब कर रहे हैं, जिसको स्ट्रक्चर डिजाइनिंग फील्ड में जाना, उनका सब मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू लेके रखा है. तो जैसे जैसे होगा हम उसको अपलोड करेंगे. सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.